Hi guys, welcome to vlog 3 of the Austria series. We are leaving Hallstatt, a beautiful village. If you haven't watched that vlog yet, please go ahead and watch it. हम लोग half रहे because we just got all of these bags and we are waiting at the train station and there is a big slope that you have to cross. और snow में करना बहुत difficult है. Anyways, the journey is gonna be beautiful because this is the train station. And these are the views that we are gonna experience. हमारी ट्रेन है फ्रॉम हेलस्टैट टू इंसब्रक बट बीच में दो चेंजेस करने हैं वो सब मैं आपको स्क्रीन पे बता दूंगी हाउ वी आर ट्रैवलिंग बट दैट इज़ गोइंग टू बी टुडेज व्लॉग इफ़ यू हैव लाइक्ड द पीछे के 2 व्लॉग्स आई एम श्योर यू गोना लाइक दिस थर्ड एंड द लास्ट व्लॉग ऑफ दिस सीरीज सो लेट्स गो. लास्ट ट्रेन चेंज दिस इज़ गोना गो टू ज्यूरिक बट हमारा स्टॉप है बीच में इंसब्रक. ऑल द बैग्स आर हियर. लेट्स डू दिस. वी हैव फाइनली मेड इट यू गाइस. ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आई. देयर वाज नो डायरेक्शन रिटन सो वी रैन एंड majority of the people have very large luggages so that is one thing that you have to keep in mind that फट से जाके you have to find a place to keep your luggage because बहुत limited जगह होती है to keep your big luggages. Anyway we are starving right now. It's like 12:30 right now. हमने सुबह भी कुछ नहीं खाया because हम घाई में निकले. So we're gonna order something from the menu. यहाँ पे कुछ इंडियन करी राइस दिख रहा है हमें कुछ तो पता नहीं वो इंडियन है कि नहीं. हम पिक्चर से गेस कर रहे हैं कि ये शायद इंडियन है तो हम वो मंगा रहे हैं एंड सम चिकन फिंगर्स एंड कोक. दैट्स इट. आई डोंट नो. आई डोंट हैव एनी हाई एक्सपेक्टेशंस बट लेट्स सी. हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते आहा मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते. मेरे हिसाब से 100% तुम मुंबई आओ. Somebody cast me in Bollywood please. Me too. मैं अच्छा दिख रहा हूँ देख. Yes, एकदम Hero. एकदम शुभमन गिल लग रहा है इधर तेरे जा रही चश्मे है में. बट इधर सीधा जाना है. किसी के भी ड्राइवे में घुस जाएगी. Sorry. संभाल. स्नो चाहिए था ना. ले स्नो ले. So अभी हम निकल पड़े हैं. You must be thinking साहिल के हाथ में ये बड़ा बड़ा क्या है. These are our 2025 vision boards that we made last year on 31st. और we never spoke about it. Yeah. Because we were like हम ये secret रखेंगे and then we'll reveal or we'll talk about it whatever we completed, what we could not, whatever the next year, which is what we are doing. इतनी सुंदर लोकेशन पे हम आए हैं तो we carried it all the way from Mumbai. Yeah. तुझे ही व्लॉग करना है. मैं ऐसे बस खड़ी रहती हूँ और तू बस ऐसे एक्टिंग करता है साइड में खड़े रहने की. खड़े रहने की भी एक्टिंग कर रहा हूँ. So yes, the next step is that we have to find a spot जो हमें like we'll sit there and we're gonna shoot. वहाँ पे एटलीस्ट थोड़ा शांति चाहिए. यहाँ पे सब जगह शांति बट वी नीड टू फाइंड अ बिगर स्पेस where we can shoot and record. Hi guys, good morning. You must be wondering कल का vlog कहाँ गया. So basically yesterday we found the perfect spot. Okay, I'll attach the clips also. We were about to start the shoot. Mic सब कर लिया and then later the moment I started talking I had like a really bad cough attack. It was so bad I thought I'm choking and my nose started bleeding. There was so much blood and I was like there's something wrong. We need to leave and then we had to stop the shoot. We rushed back to the hotel. I took my meds and I had to rest. मैंने गर्म पानी का सब gargling किया. I took a hot shower and stuff. So basically yesterday it was a kind of a health scare situation so we could not vlog. I felt so bummed about it because you know half a day was wasted. Anyways, life must go on and we cannot cry about the past. So today is an exciting day because we are going up in the mountains. Finally I'm gonna get to play in the snow. Like अभी तक मैंने snow देखा यहाँ वहाँ से थोड़ा बहुत touch किया but I didn't get to play in the snow field. So that's what we are gonna do. We are gonna go to this cable car, this area called Nordket. If I'm not wrong, this is how it's pronounced.
So I'm guessing ये किसी एक पहाड़ पे मुझे जाना है ऊपर. There are like 2 cable cars and stuff. We have booked everything from Get Your Guide. I will leave links of everything. मैंने कहाँ से क्या बुक किया, कितने में आया, सब कुछ in the description box. So we have already booked our tickets. We have to catch a bus because हम जो यहाँ पे रह रहे हैं, it's quite up in the hill. So नीचे city center में जाने के लिए we have to catch a bus, and from there there are 2 cable cars which will take us to the top of Innsbruck. Let's go. Also, before that, I know I haven't given you the house tour or room tour of this, but this is the situation of the room. So just understand what the room looks like. It's pretty small, but we wanted this because of this magnificent view that we get. Bathroom is also pretty small. Like Sahil bhi ऐसे अंदर जाता है, but it's worth it to be honest because the view is what is more important, and also the people are very sweet here. They gave us some bus passes which are like gonna not cost us anything, right? Everything is free. Public transport is free, so they gave us 2 passes, and they were also gonna give us 20% off for this Nordget booking, but हमने already कर लिया था, so that is not gonna be useful. And what else? नीचे इसमें restaurant भी है. Food choices are very like सब beef, pork वो सब है, but you can find something to eat, जो हमने कल रात को किया because मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी, so we had to eat in the restaurant. But yeah, let's go. It's 9 o'clock right now. ये पूरा चीज़ जो नॉर्डगेट का है is going to कितना है, 3 घंटे का है ये. So let's see कितना एक्चुअल में घंटे लगते हैं. I will keep you guys posted. Also, how cool is my look? Like, do you think this is Mao? This is 2026 Mao. Because I pulled this off on my own. Like what? So basically, the snow का look was gonna be this. Okay, जो रोशनी और हम सब ने मिलके plan किया था. But turns out that whatever we planned, I was not ready for this -degree temperature. So then Sahil and I, you must have seen in the Vienna vlog कि हम लोग Zara में भटक रहे थे, Zara H&M में, and I had to buy everything. So this coat is like an impulsive purchase, this hat, and also my boots. And जो मेरा all white look होने वाला था, it turned out to be like an all brown bhalu look. And I'm obsessed with it. Like, it's so cool. I love it. With these glasses, they are from Savannah. They're not some expensive glasses, you guys. They look like one, but they're from Savannah, probably for 500 rupees. But yeah, this is my look and I love it. Okay, so we have reached this station called Congress Innsbruck, and उसके बाजू में ही there is this Nordget जाने का first cable car. So I'm gonna show you. Wait. So this is where you will start your first cable car. See, can you see? We have reached the first stop, Hungerberg, and this is the view. So basically, ये जो ऊपर top of Innsbruck जाने के लिए you have to catch one train, छोटू ट्रेन जो हमने अभी ली, and then उसके बाद 2 cable cars है, ठीक है? So ये जो Hungerberg area है, यहाँ पे there are some mini cafes, there is like drinks and water, like there's a bar over here, you can eat, and then if you don't want to do all of this, you can straight away go for the first cable car. थोड़ा आगे चलने के बाद you have to enter from here. This is the entry point, and there are good washrooms right over here. I love that because ठंडी में सुसु बहुत आती है. So I'm happy that they are having clean, nice washrooms. अभी हम जा रहे हैं first cable car, and there is no line. It's because we came early morning. Like 9 o'clock, 8:30 ये चालू होता है और अभी 9:15 हुआ है. So that is why we have entered the first cable car and it's full. I don't know if you guys can see, गर्दी train में local होता है वैसा हुआ है. So please do come on time if you want like the proper view. We are the first ones, like कांच के पीछे. We're gonna see some crazy views. Let's go. फट रही है मेरी. ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, माय गॉड गाइस. पर से एकदम ग्लास के इधर ही. Guys, look at this. This is unreal.
Look at the snow. चल उस पे जाते Oh my god. हैं वो झूले पे. So basically we have reached C Group, which is the first stop of the cable car. Now we have to do one more cable car which will take us to the second stop, which is the last stop. But we are thinking to thoda take a break, explore this and then go to the second one. Sudden change of plans. We want to become kids. We are like जाने दे भाड़ में सेकंड केबल कार. इतना सुंदर यहाँ पे ये सेटअप है. यहाँ पे सारे बच्चे स्की भी कर रहे हैं. So we are just gonna take our time and do some slipping and sliding. साहिल वो लेके जा रहा है. I don't know if you guys can see, but there is very tiny snowfall. Are you ready? Oh my! Oh my god! Oh my god! I wish I could tell you the experience of just being in a white landscape. Sorry if I'm talking a little weird, is because it's -8. It's too peaceful. I don't want to leave. By the way, जो हम अभी हमने अभी जो स्लिप एंड स्लाइड किया और यहाँ पे बच्चे जो ये कर रहे हैं, ये सब फ्री है. You can get your own gear and do whatever you want. It's like a small slope and this blue thing बहुत सारे वहाँ पे ऐसे ही रखे हुए हैं. So anybody can just get it and बाजू में एक ऐसे लाइन है, यहाँ से आप ऊपर चढ़ के आओगे, एस्केलेटर टाइप है, and then you slide and go down and repeat as many times as you want. So now I'm gonna push her एकदम फुल स्पीड में. नको फुल स्पीड नको. किसी को टकरा मत जाना, ठीक है? चल माओ फैम भी तेरे को पुश कर रही है. लेट्स गो. Okay, I forgot to take horizontal footage for the second cable car, but I'll attach the vertical footage. So C Group से you take the second cable car which takes you to top of Innsbruck and यहाँ से थोड़ा सा छोटा सा हाइक है जो अपने को करना है and we will reach top of the mountain. बाप रे वो हाइट बड़ा है. Oh my god, I'm not gonna go ऊपर तक. It's very risky. हम इधर ही रहेंगे. जा सकते हैं. नहीं मेरे में नहीं है गट्स. वहाँ पे लोग चढ़ के जा रहे हैं ऊपर. आजू बाजू कोई रेलिंग वेलिंग नहीं है. इनफैक्ट जो हम ये यहाँ चढ़ रहे हैं इधर भी साइड में कुछ रेलिंग नहीं है. सेफ्टी 0, ब्यूटी 1000. Going down now and I'm super scared. मेरी फट रही है यार बहुत. हम गिर गए तो the speed. I'm scared of the speed. मम्मा Very slow. मम्मा तो ग्रेविटी को कैसे बीट करेगा यार. Engine से, don't worry. We have come back to the first cable car location, the C Group in whatever. And यहाँ का मेन्यू थोड़ा डिसेंट लगा तो हम अभी आप खाने वाले हैं because 2 बज गया and we haven't eaten, so we have to eat. We have some carrot cake.
Hi guys, it's few hours later. We went to the same spot जहाँ पे मैं कल गई थी जब मुझे खांसी का अटैक आ गया था. We went to shoot the vision board वाला, हमने वो किया. फिर एक कुत्ता हमारे पीछे लग गया तो हम वहाँ से भाग गए. भाई जो भागी है ये जो डर गई है ये. यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही है कि 4:30 बजे दिन खत्म हो रहा है लाइक एंड 6 बजे सब बंद हो जाता है. सो यू लिटरली कांट डू एनीथिंग. भक्ति दीदी, why is this woman calling me? तो उसको जीरो क्यों बोल रही है? Why is this woman calling? Say hi to my vlog. Hi. Sahil is 0 and I am hero. I don't think Mao fam will. That is Sahil true. अच्छा दिख रहा है because मैंने उसको स्टाइल किया है. I'll talk to you guys later. Hey guys, after the video call, I'll just show you कि हम क्या खा रहे हैं. This is usually our go-to food on every trip. So we are having 3 different types of cup noodles along with fries, Lay's, Coke, Stranger Things. Which flavor are you gonna eat? I think I like this one, this chili chow kappa noodles. Okay. ए भाई. And मुझे normal Maggi मसाला भी पसंद है. Guys, हम लोग ये खा रहे हैं because हमें जो हमारा जो होटल है वो थोड़ा पहाड़ी पे, जैसे मैंने आपको व्यूज दिखाया है ये व्लॉग में, तो वो व्यूज आपको नीचे नहीं मिलेंगे, वो ऊपर ही मिलेंगे. तो हम थोड़ा थोड़ा पहाड़ी पे रह रहे हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट वी कांट गो अप एंड डाउन अगेन एंड अगेन बिकॉज इधर ऊपर तक टैक्सी नहीं आती, हमें बस करनी पड़ेगी और बस भी 1 घंटे में एक बार ही चलती है और यहाँ पे सब शाम को बंद हो जाता है तो नीचे कुछ मिलेगा भी नहीं. दैट इज वाई दिस. रहा सवाल, ये होटल का एक रेस्टोरेंट भी है बट इसमें चिकन नहीं है और वेज में बहुत लिमिटेड ऑप्शंस है, बाकी सब बीफ और पोर्क है जो हम नहीं खाते. दैट इज व्हाई दिस. So guys, we are up and it's morning around I think 7:38 and what we just saw is this, that it snowed and this person is going crazy. She has to shoot a video but she's just playing with snow that is on our balcony. ये तो मैंने किया है. हाँ इकडे और फिर अंदर आ जाती है भाग के. Good morning, Mau fam. This is the scenery. It snowed last night. Sahil must have told you that. And मुझे अच्छा और बुरा दोनों लग रहा है because I could not see the snowfall. But then we got the soft snow. तूने उठाया खुद पे फेंका. So yeah. But I want to see the snowfall. ठीक है कोई ना, next time. आज भी हो सकता है, who knows. Anyways, so right now we are going to the Swarovski Crystal World जिसका मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ. You guys know my love for Swarovski and to see actually the home ground of Swarovski is going to be crazy. मैंने बहुत सारे उसके वीडियोस वगैरह देखे हुए हैं. I'm very excited. हमने जो भी एक्सपीरियंस है वो अगेन गेट योर गाइड से बुक किया हुआ है. Yeah. So the shuttle is going to pick us up and drop us to a certain location. But वो लोकेशन में पहुंचने के लिए हमें बस से जाना पड़ेगा. तो हम अभी हमारे बस स्टॉप पे पहुंच चुके हैं. शार्प टाइम पे यहाँ पे सब चलता है. So 9:26 शार्प द बस विल कम. यहाँ पे सब टाइमिंग्स लिखे हुए हैं पीछे. एंड द बस इज़ सो ऑन टाइम. कल भी मैं ऐसे भाग भाग के आई, गलती से मेरा 1 मिनट मुझे लगा था लेट आएगी बट नहीं, वो 1 मिनट भी लेट नहीं आई. बट या लेट्स गो. We came by this bus and we have reached the Crystal World. I would highly recommend कि आप ये बस से ही आओ. Yeah, because ये काफ़ी अंदर है. It's very कैब far. वैब नहीं करना कुछ भी, पैसा भी ज़्यादा जाएगा, ऊपर से बहुत अंदर है. जो हमारा टिकट हमने ख़रीदा है वो ये ट्रांसपोर्ट प्लस द स्वारोस्की के म्यूजियम के अंदर जाने का टिकट मिलके है. सो आई थिंक इट्स वैल्यू फॉर मनी, सो बाय दैट ओनली. And we calculated like the cab price हमने Uber में डाल के देखा था and Yeah. then we saw कि कितना plus हो रहा है if we take this Half transfer. हुआ हाँ, cost half में. हुआ cost. So it's a very good deal, no Yeah. doubt about it. If you haven't bought any ticket, then you can come here and buy the tickets. But since we have already bought it, we can directly enter. Everything is white. I can actually come and play. Let's play. तो देखता हूँ soft है. Oh yeah, very soft. आज ही तो आया है. Very soft snow. इसलिए पानी भी उतना ही है. Let's do this. I think शाम को ये सब light up करते होंगे वो लोग because I can see the fairy lights on this. Okay, now tell me how excited are you for Swarovski? Very. अगर अंदर शॉप है जो है मुझे मालूम है. है. There are certain
pieces that you get only over here. Yes. I'm gonna shop for them. And we just saw the big. Giant. It's -5 over here. Just this particular room. क्या लग रहा है देखो आगे? Stranger Things. रेड रेड है इसलिए. Yeah. अभी हम now we are talking because we have reached the store. So guys, हमें एक दो पीसेस अच्छे लगे हैं. Yeah, they're very like unique. Yeah. You don't see them in Mumbai ke stores. And we're gonna try this here. So yeah, I'll show you how it looks. Wow. अच्छा लग रहा है ये. Because ये बहुत डिफरेंट है ये. हाँ, dangling. हाँ, वो भी अच्छा है. बहुत प्रिटी लग रहा है ये. बट गोल्ड फिर मेरे को इयररिंग्स भी गोल्ड करना पड़ेगा. इज इट गोइंग विथ माई दिस इयररिंग्स? गोइंग ना? हाँ, it is good. Why not? सॉरी मैं बीच में ही ब्लॉक करना भूल गई बट आई हैव जस्ट गॉन क्रेजी. लाइक जो भी इन्फिनिटी में या जो भी मैंने स्टोर्स देखे मल्टीप्लाई दैट इनटू 20 उतने काउंटर्स हैं यहाँ पे. सो आई हैव जस्ट बीन बिजी लुकिंग एट दीज. Guys, one eternity later, हमने इतने शॉर्टलिस्ट कर दिया आइटम्स. If you see, it's in my tray. And where is my wife? She's still searching for more items to shortlist. किती अजून? खूप? मन नहीं भरना है. Now the trial process. begins. ये सब मैं नहीं खरीद रही हूँ guys. Oh, this is cute. You can take this. Guys, I've finalized 5 things and surprisingly everything is gold and not rose gold. I always prefer rose gold. In fact, the set that I'm wearing is also rose gold. But somehow these days I'm liking gold. So I think I'll do like a haul later. एक तो पूरा मैंने set खरीद लिया है and then one separate earrings and ring. I will show you later. I'll make like a shorts or reels about this. The damage is done. I have got such unique pieces. I can't wait to go home and show you and make a video on this. But right now it's 1:30 and we have to catch a train, not a train, sorry, a bus which will take us back to the Innsbruck station and then we are going to explore the city center and there are more shopping streets and और कुछ है और एक चीज़ है मैं भूल गई वो करनी है हमें and then we are done for Innsbruck. ये व्लॉग में मैंने इतने रिस्क लिए हैं दैट इतना महंगा कैमरा मैं कहीं पे भी सेटअप कर रही हूँ बट द स्ट्रीट्स आर सो ब्यूटिफुल दैट वी हैव टू कैप्चर इट. होपफुली द रील दैट आई एम प्लानिंग टर्न्स आउट द वे आई एम प्लानिंग. Let's go. We have reached this street called Maria something. Strabe. Strabe means street. Yeah. And it's very cute, very happening. अभी तक अंधेरा नहीं हुआ है. It will be much like क्रिसमसी वाइब तभी बट हमें शॉपिंग करना था और हमको एक चीज़ हमेशा समझ चुकी है ये ट्रिप में कि ये लोग 6 बजे शार्प सब बंद कर देते हैं. सो वी हैड टू कम हियर इन डे लाइट सो दैट वी डोंट मिस आउट ऑन शॉपिंग. कैन यू शो? We already got a lot of chocolates for our family and friends.
and some snacks which जिसका मुझे वीडियो बनाना है. Now I'm finding L'Occitane. Because Vienna में नहीं हुआ था. I'm telling Yeah. her we're gonna go there tomorrow, but आज भी कर ही लेते, कल भी करेंगे. Because I don't know if we'll go to that Graben Street tomorrow for sure or not. It all depends on हमें कितने जान है क्या है. Because we are going back to Vienna tomorrow because हमारी flight Vienna से है. So guys, again a bad news. L'Occitane आज भी बंद है. I don't understand. Saturday को उसने 9 AM to 1 PM ही रखा है. So my wife is sad, but we'll try to go there tomorrow in Vienna if possible. मुझे वियना भी नहीं जाना, बाहर में जाने अरे जाएंगे नायका आप। से खरीद लूंगी, बस हो गया. We are going to this mall called Tyrol. हमने नॉर्डगेट के इसमें देखा था, उसको बहुत बैनर्स लगे थे. Let's see if we have some good outlets and year-end sale चल रहे होंगे तो. 10 euro, 10 euro, 60, 70, 80, 90, 100, 11 euros. All right, guys. So this is our last day in Innsbruck. We are leaving for Vienna right now. Our cab is coming, but we thought let's summarize this vlog before we end it. थोड़ा footage टेढ़ा होगा because हम पहाड़ी पे हैं, तो I tried to do the tripod right, but वो हो नहीं रहा है. But regardless, this was our hotel जो अपने पीछे दिख रहा है. And the view. Let me just show you the view. This was our view. Snow-covered mountains. Yeah, the view was crazy, and that is why we chose this hotel. Yeah, थोड़ा ऊपर नीचे करने के लिए त्रास हुआ. Yeah. But I feel it's worth it. Absolutely worth it. But if I have to ask you, your favorite part from this entire trip, not just Innsbruck. My favorite part in the entire Austria trip was obviously Hallstatt. Matlab, the scenery there is actually like a postcard. Like it's picture perfect. Like ऐसा कुछ ओवर हाइप्ड नहीं है वो Yeah, जगह. yeah. एक्चुअल में जैसी True. हाइप्ड है वैसा ही है. Yeah. इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल विलेज ऑफ द वर्ल्ड. No doubt, like one day is enough to go there and visit and then chill Come back. around. हाँ, that's If you want to for stay, sure. रात को व्यू Yeah. देखना है तो definitely do a stay. Yeah. But 1 day is enough. But I feel that was the bestest part, one of the best parts of Yeah. Austria for me. Yeah. What about you? For me also it was Hallstatt, no doubt, and also the Nordket that we did. Yeah. Because Snowmaking. because I am somebody who's never seen snow. I have not played in snow. I've not seen snowfall. Sadly, I haven't still seen snowfall, but that's fine. I think I'm taking way too many amazing memories Yeah. with me, so it's fine if I didn't see the snowfall. And Vienna is again about architectural history. That's what I was about to So, come and say, yeah. that कि Vienna is like human marvels. And Yeah. this is like nature Nature marvels. marvel, true. So like आपका जो choice होगा वैसे आप कर सकते हो. Because Vienna में you won't see like ऐसी scenery anywhere. It will be Yeah. just like the amazing architecture and beautiful museums and stuff. Over here it's just nature. Like if you can see पीछे का architecture कुछ है नहीं. It's like normal hotel है. Hotel. But सामने जो दिख रहा है वो you can't compare at all. But then Vienna mein you definitely have better food and Yes. better street life. So like we were only speaking yesterday ki it's a good thing that we took this trip because it is opposite our genre. Like we've Yeah. been to Japan, Korea, USA. So वहाँ पे सारे metropolitan cities and street cities. We've done scenic spots as well. We've Yeah. enjoyed that. But this was one country जिसमें entirely it was everything was Nature. scenic and nature and architecture and history. Yeah. So we're glad and I think we would want to do more countries like these. This. जिसमें Nature इतना ज़्यादा nature हो. और history अच्छे से. Yeah, we loved every spot that we covered. So as I said, you pick and choose where you want to go. You can skip 1 and 2, or if you can do 3, I would suggest do all 3 because कोई भी जगह that we went, Vienna, Hallstatt and this Innsbruck, Yeah. nothing has disappointed us. Everything was so beautiful. Just carry your own food because European food, as I said, it is like जगत जाहिर है वो कि हमने कल भी Italian जगह try की and it was so bad. Yeah. But anyways, we were prepared because हमने जो कोरिया में mistake की थी वो हमने यहाँ पे नहीं की. We carried our own food, so we were not hungry and starving. So yeah, that is it for this vlog. I'm gonna end it. अभी हम जा रहे हैं ट्रेन लेके टू वियना बिकॉज हमारी फ्लाइट वियना से है. अगर कुछ होता है इवेंटफुल तो मैं व्लॉग में डाल Yeah. दूंगी ये, बट आई डोंट थिंक कुछ होने वाला है. जस्ट गोना बी द सेम ट्रेन जर्नी. वी गोना चेक इनटू द होटल, ईट फूड एंड नेक्स्ट डे फ्लाइट है. सेम कंटेंट. सो शॉर्ट्स या रील्स में शायद आ जाएगा, बट व्लॉग आई थिंक वी नीड टू Cut short and not bore them if you're getting bored, guys. वहाँ पर अभी कंटेंट नीचे नहीं लिखेगी. वी नेवर गेट बोर्ड. पोस्ट वन एंड सम पीपल से पोस्ट अनएडिटेड 1 hour vlog. They are that cute. Anyways, so yeah, that's it for today's vlog. I hope
hope you have loved the entire series, this Austria series. If you have, don't forget to share it with your friends. Let's grow our family on More Mau as well. And yeah, I'll see you next time. Until then, stay positive and stay happy. Bye. Hey, my goodie, my goodie, my goodie, hey, chopper on the nigga, turn him to a sprinter.